Now we are going to discuss about the effects of this adjustment on the income statement and balance sheet, how these adjusting entries affect on each and every account given in the income statement and balance sheet. First, we are going to start with prepaid expenses. Prepaid expenses, as you know, the future expenses which have been already paid in advance. So, at the time of adjustment, we are converting assets to expenses. So how this conversion affects on the income statement first. Since we are talking about expenses, there is no role of revenue, so there will be no effect on revenue. By the way, NE means no effect, I means increasing effect, and D means decreasing effect. So revenues, there will be no effect since there's no role of revenue. Second, expenses. When you are converting assets into expenses, expenses are increasing, so there would be an increasing effect on the expenses. Obviously, when the expenses are going to increase, your net income is going to decrease. For example, पहले हमारे पास रेवेन्यू था 10,000, हमारे एक्सपेंस थे 8,000, so हमारा नेट इनकम वुड बी 2,000. अब इसी सिनेरियो को लेते हैं कि रेवेन्यू एग्जैक्टली हमारे अभी भी सेम है, बट मेरे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए. मेरी नेट इनकम क्या आ गई? 1,000. You can see that due to increase in expense, your net income is decreasing, and it's same. Now let's talk about balance sheet. How does this conversion affect the balance sheet? When you are converting assets to expenses, assets अब expense में convert हो रहे हैं, so definitely your assets are going to decrease. Since there is no discussion of liabilities का कोई जिक्र ही हमने नहीं किया, सिर्फ asset and expense की बात हो रही है, so लिहाजा liabilities have no effect. Lastly, owner's equity. You know, अगर हम वापस देखें, revenue and expense and owner's equity. Revenue and owner's equity का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी कि रेवेन्यू इंक्रीज होता है, ओनर्स इक्विटी भी इंक्रीज होती है. वेयर एज एक्सपेंस एंड ओनर्स इक्विटी का इनवर्स रिलेशनशिप है. इनवर्स कैसे? अगर जैसे ही एक्सपेंस आपका, आप कहते हैं कि मैंने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है, ओनर्स इक्विटी आपकी कम हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर हम देखें, सिंस माय एक्सपेंसेस आर इंक्रीजिंग, सो माय ओनर्स इक्विटी इज डिक्रीजिंग. अब यहाँ पे हम आते हैं सेकंड पे, अनअर्न रेवेन्यू. अनअर्न रेवेन्यू, you have already collected the payment in advance, but the services has not been rendered or the product has not been yet delivered. So यहाँ पे हम बात करते हैं when you are converting liabilities into revenue. क्योंकि पहले आपने प्रोडक्ट सर्विस नहीं दी हुई थी, पेमेंट ली हुई थी, तो आप पे लाइबिलिटी थी. बट नाउ वंस यू रेंडर द सर्विसेज, देन आप पे कोई लाइबिलिटी नहीं रहती. सो देयरफॉर नाउ लाइबिलिटीज आर कन्वर्टिंग इनटू रेवेन्यू. अब सबसे पहले देखते हैं इफेक्ट इनकम स्टेटमेंट में. इनकम स्टेटमेंट में, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू, व्हेन योर लाइबिलिटीज आर कन्वर्टेड इनटू रेवेन्यू, सो रेवेन्यू इज गोइंग टू इंक्रीज. देयर इज नो डिस्कशन ऑफ एक्सपेंसेस. कोई भी हमने बात नहीं की एक्सपेंसेस की, ना कोई इसका रूल है, so there will be no effect on expenses. अब देखते हैं what would be the effect on net income. Obviously, हम जब कह रहे हैं कि रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है और एक्सपेंसेस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो नेट इनकम क्या हो जाएगी? मेरी इंक्रीज हो जाएगी. अगर हम इसी को यहाँ पे देखते हैं, जी हमारे यहाँ पे रेवेन्यू वॉज 10,000, expenses were 8,000, my net income was 2,000. अब मैं अगर यहाँ पे देखूं, मैं एक्सपेंसेस को सेम ही ले लूँ 8,000, बट मैं अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर दूँ. मैं अगर रेवेन्यू को इंक्रीज कर दूँ 15,000 कह दूँ, सो मेरा नेट इनकम कितनी हो जाएगी? मेरी
7,000। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आप देख सकते हैं एक्सपेंसेस आर एग्जैक्टली सेम, देयर इज जस्ट अ चेंज इन योर रेवेन्यू। सो अगर रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, my net income is also increasing. Now let's come to balance sheet. We have not discussed anything about assets. There is no role of assets in earning revenue, so there is no effect. Now liabilities. Since now you are converting your liabilities into revenue, when liabilities will be converted into revenue, then obviously liabilities are going to decrease. Last is owner's equity. We know revenue and owner's equity have a direct relationship. Revenue increases, you record a revenue, owner's equity is automatically going to increase. So therefore, here owner's equity is going to increase. Next is accrued expenses. Accrued expenses, the expenses that have already been incurred but not yet paid. And accrued means accumulating. So here we are saying accruing unpaid expenses. Remember, we are talking about unpaid expenses. First of all, we are talking about expenses. There is no rule of revenue, so there is no effect. Unpaid expenses, they are unpaid, but still expense has been incurred. When expense has been incurred, it means expenses increasing. Again, जब आपका एक्सपेंस इंक्रीज होता है, आपकी नेट इनकम क्या होती है? डिक्रीज होती है। हमने ऑलरेडी इधर पहले वर्किंग करके दिखा दी थी। नाउ लेट्स कम टू बैलेंस शीट। एक्सपेंसेस एंड अनपेड। अनपेड का मतलब है जो बाद में पे करना है, पेबल। एसेट का कोई रोल नहीं है, सो देयर इज नो इफेक्ट ऑन एसेट्स। बट यस, there would be an effect on liabilities. Why? Because these are the expenses which are unpaid. Unpaid, so we will be paying in future. When we will be paying in future, it's a liability on a company. So liability is increasing. Last is owner's equity. Since expenses are increasing, so owner's equity is going to decrease. Last is accrued revenue, accumulating uncollected revenues. Accrued revenues again, you have already provided the service, but the customer has not paid yet. So it's basically a receivable. Remember, uncollected and revenues. First of all, revenue. Yes, हम revenue की बात कर रहे हैं कि आपने सर्विस दे दी है, बट पेमेंट रिसीव नहीं हुई आपको कस्टमर की तरफ से। बट एज पर प्रिंसिपल, रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल, यू हैव प्रोवाइडेड सर्विस, यू हैव अर्न्ड योर रेवेन्यू। जब आपने रेवेन्यू अर्न कर लिया है तो आपका रेवेन्यू क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। Since there is no role of expense, so there would be no effect on expenses. Again भी है, मैंने यहाँ पे वर्किंग करके दिखाई थी। Whenever revenue increases, net income automatically increases. Now let's come to balance sheet. We are saying about uncollected. Uncollected means to be received in future, known as accounts receivable. We know accounts receivable is an asset. So लिहाजा जब हम receivable की बात करें कि हमें पैसा मिलना है, it's a receivable. So your asset will increase. There is no role of liabilities, so there is no effect on liabilities. Last is owner's equity. We know whenever revenue increases, owner's equity automatically increases. So this is the effect of adjustments on income statement and balance sheet. Now, I have actually question नहीं, मैं आपको इधर एक्सप्लेन करना चाहूँगी। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको समझ नहीं आती कि हाउ माई ओनर्स इक्विटी इज एक्चुअली इंक्रीजिंग, किस तरह से मेरी ओनर्स इक्विटी इंक्रीज हो रही है जबकि मेरी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है ड्यू टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ठीक है,
अब यहाँ पे मैं आपको इसकी थोड़ी वर्किंग करके दिखाना चाहूँगी। आई एम गोइंग टू प्रिपेयर द होल स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी फॉर यू। ठीक है। हम्म, अब यहाँ पे मैं स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी पूरी आपके सामने बनाऊंगी ताकि आपको बेसिकली ये समझ आए कैसे ये हम रिलेशनशिप बोर्डिंग के जी एक्सपेंस के बढ़ जाने से ओनर्स इक्विटी मेरी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। सबसे पहले मैं एक प्रॉफिट assume that Mr. A started a business and Mr. A started business in 2019. So the beginning capital was zero as the business was started in 2019. So there was no ending capital in 2018. The house of beginning capital in 2019 will be zero. Then he made an investment. He made an investment of 5 lakhs, rupees 5 lakhs, and during this 2019, the business earned a revenue of 40,000, and the expenses were around 25,000, and total withdrawals were somewhere around 5,000. Okay, now let's prepare a statement of owner's equity. If you remember the format, I'm not going to write down the company name, statement, and all. I'm just going to show you the major steps. We started with the beginning capital, then we plus, just a second, then we add investment by owner, and we add net income as well, whether it's a net profit or a net loss, and then we less withdrawals by owner, and in the end we get ending owner's equity. So, sorry, here we have beginning owner's equity. Okay, so beginning owner's equity was kindly correct the mistake here. It's equity. It's zero. Investment by owner was rupees 5 lakhs. So rupees 5 lakhs. Net income, we have to calculate the net income. Revenue minus expenses gives the net income. 40,000 are revenues, expenses are 25,000. We are left with 15,000, which is actually a net profit. Net profit. If we add them, 5 lakh plus 15,000, we get 5 lakh 15,000. 5 lakh 15,000. And the total withdrawals by owner are 5,000. So we minus 5,000, and in the end, the ending owner's equity would be 510,000. Okay. Now let's assume that revenue remains same, but the expenses are now 35,000. If we go back to this business owner's equity, if we go back to this statement of owner's equity, investment is same, withdrawals are same, but now net income would be changed. How? 40 minus 35,
Now we are left with only 5,000. When we are left with 5,000, now let me remove this part so that I can work again. Just a second. Okay, investment by owner is same. Net income has changed. Now what would be the total? 5,000. The withdrawals were same, right? And now we are left with 5 lakh. Previously हमारे पास कितना था? अगर मैं वापस करूँ, I don't actually remember. Let me go back just a second. So yeah, previously we were left with 10,000. Okay. Okay. So अब याद रखिएगा, मैं वापस से इधर लिख रही हूँ. First scenario, we had 5,10,000 ending owner's equity. Okay. Then in the second scenario, where revenue was same but expenses were increased, we had an owner's equity of 5,00,000. So if we go back to this grid, let me take you back here. We said whenever expense increases, owner's equity, whenever expense increases, owner's equity decreases. Just a second, I think there's some issue. Whenever owner's equity increases, whenever expenses increases, owner's equity decreases. हम यहाँ पे यही देख सकते हैं कि हमारा रेवेन्यू एग्जैक्टली सेम था. अगर मैं यहाँ पे वापस जाऊँ, अगर मैं यहाँ पे वापस जाती हूँ तो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि यहाँ पे रेवेन्यू पे मेरा कोई इफेक्ट भी नहीं था. नो इफेक्ट. सिर्फ एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा था जिसकी वजह से ओनर्स इक्विटी डिक्रीज हो रही थी. मैं वापस अपने इस एग्जांपल पे जाऊँ तो हम देख सकते हैं रेवेन्यू सेम थे, सिर्फ और सिर्फ मेरा एक्सपेंस इंक्रीज हो गया था, लिहाजा मेरी ओनर्स इक्विटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई. पहले एंडिंग ओनर्स इक्विटी 510 थी, अब ओनर्स इक्विटी 500,000 हो गई, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन एक्सपेंस. अब इसी तरह से अगर हम इस सिनेरियो को वापस से देखते हैं, प्रीवियसली हमारे एक्सपेंसेस कितने थे? 25. वही वाला हम सिनेरियो रखते हैं जो शुरू में था, एक्सपेंस का 25. अब हम कहते हैं यहाँ पे एक्सपेंस इंक्रीज होने के बजाय हमारा इंक्रीज क्या हुआ है? रेवेन्यू. ठीक है. मेरा रेवेन्यू फॉर एग्जांपल हो गया है 50. अब वापस मैं एग्जांपल पे आती हूँ, वापस आई. इन्वेस्टमेंट इज स्टिल द सेम, विड्रॉल्स आर स्टिल द सेम. हमें सिर्फ नेट इनकम चेंज होगी. पहले रेवेन्यू 40 था, 50 हो गया. 50 minus 25, we are left with net income of 25. अब हमारी यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी अगेन, राइट? सो अगर मैं देखूँ, अब मेरे पास जो इसका टोटल आएगा इन दो का, इट वुड बी 525,000. ठीक है. अब इसी तरह से जब मैं 525 में से 5 को माइनस करती हूँ, आई एम लेफ्ट विथ 520,000. So this is the third scenario जहाँ पे मेरी एंडिंग ओनर्स इक्विटी आती है 520,000. अब आप यहाँ पे देखिएगा वापस से. फर्स्ट सिनेरियो में रेवेन्यू वाज 40,000 एंड द एक्सपेंसेस वर 25,000. हमारे पास ये आया था. थर्ड सिनेरियो में हमने क्या किया? एक्सपेंस हमारा 25 ही रहा, हमने सिर्फ इंक्रीज क्या कर दिया? रेवेन्यू. कितने से किया? 10,000 से, यानी वहाँ पे 50,000 रेवेन्यू हो गया था. मेरी ओनर्स इक्विटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई. हम कहते हैं रेवेन्यू इंक्रीजेस
ओनर्स इक्विटी इंक्रीजेस, यस। रेवेन्यू जब यहाँ पे 40 था, यहाँ पे 50 हुआ, एक्सपेंस दोनों में सेम रहा, 25 वी कैन सी ओनर्स इक्विटी इंक्रीज्ड। एक्सपेंस इंक्रीजेस, ओनर्स इक्विटी डिक्रीजेस, यस वी कैन सी। मेरा एक्सपेंस यहाँ पे कितना था फर्स्ट सिनेरियो में 25, जैसे ही सेकंड में मैंने 35 किया, फौरन मेरी ओनर्स इक्विटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। सो अगर किसी का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर नहीं था कि किस तरह से हम क्यों बार बार कह रहे हैं ओनर्स इक्विटी डिक्रीज हो रही है, सो हियर इज द कंप्लीट information. And now we are done with this topic of accrual accounting, which is basically adjustments. अब एक चीज़ है इसमें एंड में कि जैसे हमने प्रीवियसली ट्रायल बैलेंस बनाया था अपने जर्नल एंट्रीज के बाद एंड टी अकाउंट्स के बाद, इसी तरह से इस ट्रायल बैलेंस के बाद जो ट्रायल बैलेंस होता है नॉर्मल, उसके बाद हम करते हैं अपनी एडजस्टमेंट्स। जैसे आपने देखा होगा एडजस्टमेंट्स हम कर रहे हैं अपनी मंथ एंड पे कर रहे हैं, ईयर एंड पे कर रहे हैं। जैसे ही आपने एडजस्टमेंट्स की हैं, आफ्टर एडजस्टमेंट यू अगेन प्रिपेयर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ठीक है। पहले वैसे ही जैसे जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, एडजस्टमेंट्स करने में एडजस्टिंग एंट्रीज पास करते हैं, फिर जो एडजस्टिंग एंट्रीज पास की हैं उसके आपने टी अकाउंट्स बनाए, देन यू प्रिपेयर एन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ठीक है। जो प्रीवियस ट्रायल बैलेंस था उसके भी आइटम्स आएंगे, और जो एडजस्टिंग एंट्रीज की हैं उसके भी आइटम सारे के सारे आ रहे होंगे, सही है। फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद अगेन यू विल प्रिपेयर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यू आर गोइंग टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी। सो आई एम गोइंग टू शेयर सम क्वेश्चंस विथ यू एंड उसमें आपको काम करना होगा। आप देखिएगा किस तरह से उस पर काम हुआ है।